हेलो 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 माइक चेक। आई थिंक यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आप बेटर। हेलो माइक चेक। I'm audible to everyone. Just open the chat box. Anything is there. Just check. See the chat box. Am I audible to everyone? Okay, so no comments. So I believe that I'm audible to everyone. Okay, so good morning, everyone. This is Dr. Malka Sharma, Organizing Secretary for the International Short-Term Training Program 6, which has gained its popular name as ISTTP-6 with a chosen topic: greener living, reduce, reuse, and recycle. Under Component 8, Enhancing Quality and Excellence through SAR 2.0 scheme, and Commissionerate and State Project Directorate, College Education, Government of Rajasthan, India, which is being organized by Rajashri Government Autonomous College, Alwar, which is formerly known as the ISTTP, signing in from this newly revamped beautiful Jubilee Hall, which is equipped with ultra-modern facilities such as high-tech audio-visual systems and voice-sensitive cameras and mics. On the behalf of our beautiful principal and from the organizing committee, I welcome you all to the sixth day and the second last day of ISTTP-6. There's somebody writing, I'm not audible. I'm audible to everyone. Now there's one Preeti Mathur is writing, I'm not audible. Sridhar, please check the audible. It's fine. Okay. So maybe please check because the it is fine. You check on the voice is not clear. One call is also writing. Hello. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Hello. Okay, Dr. Sonal, I can hear your voice. I take that I'm audible to everyone. I want a world where everything is welcome, everything is valued, everything is acknowledged, embraced, and accepted. To me, that's the perfect world. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to you all. Your presence makes us very, very happy. सभी का इंटरनेशनल शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम के छठे दिन में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मास्टर्स ज्ञान और चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। वह व्यक्ति है मास्टर्स को समझ ज्ञान साहित्य और संगीत और कला को भी माना जाता है। मास्टर्स की आराधना करते हुए हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की छठे दिन की शुरुआत कर सकते हैं। I can see Dr. Ajay Verma here. He is ex-principal government college from the Commissioner of Work Education. Sir, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत खुश है आपका स्वागत। Thank you very much, ma'am. Thank you so much, sir. We are beginning the sixth day of ISTTP-6 for discuss with the and worship with her. We have a life crisis in that, so we may have some hiccups today, so please be with us. Let's discuss what we have done on the fourth and the fifth day of ISTTP 6. On the day four, our first keynote speaker was Dr. Anil Dehra, who is associate professor and right now is posted at Commissioner of College Education, Government of Rajasthan, India. He spoke on the waste management. After that, we have Martha and State. He's working as assistant professor at Springall College State University. He spoke on agroforestry. Agroforestry replaces the chemicals and toxins in the woodlands. He spoke on this topic. After that, we have Dr. Prabhu Dev Campus, who is working at Government Polytechnic, ES, and Faculty of Engineering, and associate professor.
Government Polytechnic, Karnataka, and he's on green lifestyle for a healthy environment. Day 5 was of course a Sunday and it was our home assignment day. And the topic for the home assignment was explained in detail in Indian living cycle. And today here we are in front of each other, bringing the day 6 into life. One of the first conditions of happiness is that link between man and the nature should not be broken. We should live in commensalism with nature as nature is conditions. He that plants the tree loves others besides himself. He that plants the tree loves others besides himself. The earth will not continue to offer its harvest except with faithful steward. You cannot say we love the land and then take steps to destroy it for use by future generations. I always say that we should always work and come out of the toilet blocks and think globally and globally. So that's what I'm trying to say. Without taking much time, I will introduce to you our first keynote speaker. Our first keynote speaker is Dr. Prince Solwan is working as an assistant professor in geography in SCI's Government College at Savai Madhopur, Rajasthan, India. He did his MSc and MPhil from Department of Geography, University of Rajasthan, Jaipur. He awarded a PhD degree in water resource management from Kota University. He has 11 years of experience in research and teaching. He is an author of a book of books and also edited 6 journals. He has published dozens of research papers in national and international journals. He has presented many research papers in national and international seminars and conferences. He participated in many webinars and seminars as a resource person and also performed as a convener in national level webinars on environmental conservation, geoinformatic technologies, and intellectual property rights. He's associated as a life member in various academic bodies, including Indian Institute of Banking and Finance, Rajasthan Geographical Association, Association of Geography in India, Social Science and Humanities Association, and Virar Research Association. He actively participated in MPs, as technical workshops, symposiums, and administrative education. He's making people aware about the issues related to water resources, management, and environmental conservation along with teaching. So, Dr. Solwan, I'm so happy that you are here with us, and it's such a wonderful CV. We are very pleased to have people who have worked in banking sector and now they are in teaching and still they are associated with environmental conservation. I think हमारे देश में हमारे पेटेंट डॉक्टर जी आ चुके हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। सर मैं बताना चाहूँगी हम क्या क्या करना है हमारे साथ जुड़े हुए हैं So, Dr. Solwan, without taking much of time, I would request you to kindly start with your deliberation. आपका स्वागत है, अभिनंदन, Dr. Solwan. Thank you, madam. Thank you for a nice introduction. सबसे पहले तो मैं आर गवर्नमेंट कॉलेज अलवर के लिए ISTTP-6 आयोजित हो रही है। इसमें मुझे बुलाने के लिए सबसे पहले मैं महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर हुकम सिंह जी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर ममता शर्मा का बहुत बहुत आभार हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया है अपनी बात रखने का। और जो मैं बात आज करूँगा वो वाटर रिसोर्स के ऊपर करूँगा, वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन। मैं अपनी बात महात्मा गांधी जी के कथन से प्रारंभ करना चाहूँगा। पृथ्वी पर जल, जंगल, जमीन और विभिन्न प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास हैं, लेकिन हम जो इनका मिसयूज कर रहे हैं और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है
उनकी जरूरतों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, क्योंकि मेन जो रिसोर्सेज की हानि हो रही है वो मैन मेड ही हो रही है। तो महात्मा गांधी जी के कथन से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जी ने कहा था, पृथ्वी के पास सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हर किसी के लालच को नहीं है। महात्मा गांधी का ये कथन प्राकृतिक संसाधनों के जो समझदारी भरे उपयोग पर आधारित है, न कि प्रकृति, जंगलों, नदियों की सुंदरता के विनाश पर आधारित होते हैं। हम सभी जानते हैं कि संसाधन वे होते हैं जो उपयोगी हो या फिर मनुष्य को अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए उपयोगी बनाए जा सकते हो। ऐसे संसाधन जो उपयोग करने के लिए परोक्ष रूप से प्रकृति से भी प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन है। जैसे मैंने पहले बताया, इसमें वायु, जल, मृदा, भूमि, वन, जैव विविधता, खनिज और जीवाश्म ईंधन सभी हैं। इस प्रकार जो प्राकृतिक संसाधन हमें पर्यावरण से प्राप्त होते हैं, बढ़ती लेकिन जो वैश्विक जनसंख्या और अपने जीवन स्तर का जो उन्नयन है, जो सुधार है, उसमें मनुष्य की लगातार बढ़ती जो इच्छा है के कारण सभी प्रकार के नई तकनीकी आविष्कार हुए हैं। इन आविष्कारों ने हमारे जीवन को तो आरामदेह बना दिया, लेकिन इसके बदले में वायु, जल, खनिज और ऊर्जा की मांग भी बढ़ गई है, और हमारे चारों ओर प्राकृतिक संसाधनों का जो त्वरित जो क्षरण प्रारंभ हुआ है, उसका विनाश रूप हमारे सामने है ही। वैश्विक जलवायु में भी अभूतपूर्व परिवर्तन किए गए हैं, हुए हैं मानव के द्वारा, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर मानव और प्राणी जातियों के अस्तित्व पर भी गंभीर प्रभाव पड़े हैं। हम इसके कुछ जो दुष्परिणाम हैं उसमें जैसे ऋतु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और जो सी लेवल का बढ़ना और जो फसल चक्र है उसमें चेंजेस भी देखने को मिला है। इसके अलावा जो लैंडस्लाइड है, सुनामी है, अकाल, महामारी, जन पलायन और स्वास्थ्य की अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई है हमारे सामने। तो आज जो हम बात करेंगे जल संसाधन की, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जल एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है और ये जीवन का आधार भी है। यह न केवल मानव के लिए बल्कि जीव जंतु एवं पादप जगत जो प्लांट है उनके लिए भी आवश्यक है। जीवन, आजीविका और पारिस्थितिकी के साथ साथ खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण जो पर्यावरण की प्रक्रिया है जल के द्वारा ही संचालित होती है, और जल मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक अमूल्य संसाधन है। जल की अगर उपलब्धता हो तो ये विकास का प्रेरक है, लेकिन जब इसका अभाव होने लगता है तो विनाश प्रारंभ हो जाता है। जल पेयजल के अलावा कृषि, उद्योग, परिवहन आदि के अलावा जो फॉरेस्ट्री है, मनोरंजन, पर्यावरण, इसमें भी काम आता है। इसी प्रकार जो कुछ भाग जो जल का है, जो मुख्य सोर्स इसका रेन वाटर ही है, लेकिन कुछ भाग नदियों में, नालों में और तालाबों में सतही जल के रूप में वे कुछ भाग रिस कर भूमि के अंदर, एक्वाफिर के अंदर जमा होने लगता है। यदि हम प्रकृति में विभिन्न दशाओं में जल के स्थायित्व की बात करें तो एक जो सीसी पार्क बड़े वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1997 में प्रकृति में विभिन्न दशाओं में जल के स्थायित्व के बारे में बात रखी। इनके अनुसार पादप, प्लांट और जीव जंतुओं में जो जल का स्थायित्व है, जल का ठहराव है, 1 सप्ताह तक होता है। वायुमंडल की बात करें तो 8 से 10 दिनों तक होता है, और नदियों की बात करें तो 2 सप्ताह तक जो फ्रेश वाटर है उसकी बात वो होता है, और अगर मिट्टी की बात करें तो 2 सप्ताह से 1 वर्ष। इसके अलावा लेक्स, रिजर्वियर और आर्द्र भूमि की बात करें तो वर्षों तक फ्रेश वाटर रहता है। शैले, रॉक्स की बात करें तो इसमें कुछ दिनों से हजारों वर्षों तक रहता है। हिम की बात करें और महासागरों की बात करें तो हजारों वर्ष तक पानी रहता है। जल की महत्व का एक यह भी प्रमाण है कि ये जिधर से भी होके गुजरता है तो इसने आबादी के साथ साथ सभ्यताओं को जन्म दिया है, उन्हें सजाया है, संवारा है। परंतु धरती का लगभग 2/3 हिस्सा पानी होते हुए भी स्वच्छ जल लगभग 2.7% ही है,
और इसमें भी 3/4 तो जो ध्रुवीय बर्फ है, जो पोलर रीजन है, वहां पे जमा है, जो हमारे उपयोग का नहीं है। अगर ये पिघल जाए तो एक तरह से संकट की स्थिति हो जाएगी। अतः कुल जो शुद्ध जल की बात करें तो वो 1% भाग ही हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है, जो नदियों के द्वारा, झीलों के द्वारा, तालाबों के द्वारा और भूजल के द्वारा हमारे लिए उपयोगी है। और जो शेष जल है 97.30, बहुत बड़ा हिस्सा ये समुद्र में खारा है और अनुपयोगी है। एक तरफ जहाँ पे बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित जो शहरीकरण है, दिशाहीन विकास है, और कृषि के क्षेत्र में भी जो पानी का बढ़ता हुआ उपयोग है, तो इसके कारण पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और भारत जैसे देश में मानसून की अनिश्चितता, और इसके अलावा भूजल का जो जिस हिसाब से हम भूजल का दोहन कर रहे हैं, तो वो भी एक हमारे लिए आने वाले समय में संकट की स्थिति होगी। और जल के जो प्रबंधन की हम बात करते हैं, प्रबंधन से पहले मैं कुछ जो रिपोर्ट है उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक रिपोर्ट आई थी 2016 में, विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2016 में। इसमें ये बताया गया है कि जो प्रभावकारिता का स्तर पर अगर जल संकट की बात करें, तो विश्व का सबसे बड़े खतरों में एक बहुत बड़ा खतरा है। और जल संकट के हम जो विविध आयाम देखते हैं, जैसे भौतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय, इसमें जल गुणवत्ता की भी बात होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट आई, उसमें अगर बताया गया है कि 2030 तक अगर दुनिया को पानी की आपूर्ति में 40% कमी का सामना करना ही होगा। और दुनिया भर में जो इस्तेमाल होने वाला जो कुल जो फ्रेश वाटर है, उसका 70% तो हम देखते हैं कृषि क्षेत्र में चला गया। सन 1950 तक सिंचाई के लिए जल की मांग में 6% भी वृद्धि होने की संभावना है। यदि हमने समय रहते जल संकट से बचने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं किए, तो अगला जो विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य और विभिन्न जो राज्यों के मध्य भी पानी के बीच में अक्सर जो जो एक तरह से टकराव देखने को मिलती है, वो हम इससे काफी वाकिफ हैं। और विश्व बैंक में हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई, वो भी इस बात की पुष्टि करती है कि पानी की मांग तो पहले से बढ़ी है, लेकिन जलवायु परिवर्तन संगठन ने इसको और अधिक जो संकट में डाल दिया है। तो अभी हाल ही में जो 2030 तक का लक्ष्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसमें भी इन सभी बातों की बात रखी गई है कि जो भी जो सामान्य नागरिक और जो नीचे से नीचे के जो तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, और उनको, और जो ऊपर के लोग हैं, जो उनको सबको सारी चीजें समान रूप से वितरित की जाए। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो लक्ष्य नंबर 6 है, इसमें भी जो मेन रूप से पानी की बात करिए, पानी की उपलब्धता और पानी का तथा स्वच्छता के सतत प्रबंधन पे जोर देने की बात कही है। भारत में जो मूल रूप से जो जल संकट है, उसका मूल कारण है एक तो जल की बर्बादी, एक तो अवेयरनेस होने के बाद भी पता नहीं हम क्यों ज्यादा इसको मतलब इसको एक तरह से खर्च करते हैं कि ये काफी मात्रा में है। और एक है कुप्रबंधन। पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा कि जो अनियमित मानसून और जलवायु परिवर्तन है, उससे और भी संकट हमारा बढ़ गया है। प्राचीन समय में हम जल को बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण संसाधन मानते हैं, और प्राचीन समय से ही इसके संरक्षण की बात हो रही है और कार्य किए जा रहे हैं। जो प्राचीन एक धारणा है कि जो ब्रह्मांड है, उसके 5 मूल तत्व में क्षिति, पृथ्वी, आप, तेज, आपका मतलब जल, और तेज प्रकाश या उष्मा, मारुत है मतलब वायु, और व्योम आकाश से मिलके ये ब्रह्मांड बना है। और ऋग्वेद के अनुसार तो ये कहा गया कि जीवन जल से ही निकला है। शुद्ध जल को शीतम ठंडा होना, शुचि स्वच्छता, शिवम उपयोगी खनिजों एवं तत्वों से युक्त, स्थम पारदर्शी तथा विमलम लघु षडगुणम, अम्लता का संतुलन सामान्य सीमा से अधिक ना हो, के गुणों के कारण ही दिव्य जल कहा गया है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो जल के औषधीय भी गुण हैं।
भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जल को जीवन का आधार माना है एवं जल के अनेक अनेक गुणों के कारण, जैसे मैंने पहले बताया, इसको दिव्य जल भी कहा गया। ऋग्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि जल ही औषधि है, जल रोगों का शत्रु है, ये सब व्याधियों का नाश करता है। ऋग्वेद के एक जो 49वें सूक्त के अनुसार एक मंत्र में कहा गया है, या आपो दिव्या उत वा सर्वंती खनित्रिमा उत वा या स्वयं जा समुद्रार्थ या शुचि पावकास्था आपो देव ही रिह माम वंतु। जो दिव्य जल आकाश से वृष्टि के द्वारा प्राप्त होता है, जो नदियों में सदा गमनशील है, खोदकर जो कुओं आदि से निकाले जाते हैं, और जो स्वयं स्रोतों के द्वारा प्रवाहित होकर पवित्रता बिखेरते हुए समुद्र की ओर जाता है, वो दिव्यता युक्त पवित्र जल हमारी रक्षा करे। ग्रामीण क्षेत्रों की बात आती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता के पानी की आपूर्ति और साफ सफाई एवं स्वच्छता प्रत्यक्ष रूप से लोगों के स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण से भी जुड़ी हुई है। असुरक्षित और प्रदूषित जल के उपयोग के कारण जो नगरीय क्षेत्र है, वहाँ की कच्ची बस्तियों के लोगों में स्वास्थ्य में गिरावट होती है और कई प्रकार की बीमारियां वहां पर फैलती है। जल, जैसा कि पहले बताया, कि पौधों, जानवरों, मनुष्य को बनाए रखने के लिए, उसके अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवि रहीम भी अपने दोहों के द्वारा जल की महत्ता को उजागर करते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। यानी कि जल के बिना जीवन ही संभव नहीं है। भारत की बात करें तो भारत में संसार की 18% से अधिक आबादी है, जबकि विश्व का केवल 4% ही जल संसाधन है, और विश्व के जो टोटल क्षेत्र है उसका 2.4% है। भारत में यदि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की बात करें तो प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगभग 5,236 घन मीटर थी, जो 2010 तक 1,588 घन मीटर ही रह गई। यदि इसी प्रकार से जनसंख्या वृद्धि होती रही, कुप्रबंधन होता रहा और जल का संरक्षण नहीं किया, तो 2025 में सतही जल की उपलब्धता लगभग जो आंकड़ों के अनुसार बताई गई है 1,401 घन मीटर एवं 2050 तक 1,191 घन मीटर तक पहुंचने की संभावना हो जाएगी। तो हमें जो वर्षा का जल है उसके उचित संग्रहण, संरक्षण और प्रबंधन के अभाव में जो वर्षा का जल अतिरिक्त रूप से बह जाता है उसको सजो के रखना है। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के नाते भी पानी की सर्वाधिक खपत होती है, तो जो हमारे पानी के उपयोग का लगभग 70% से 80% तो खेतों में होता है, तो वहां पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। एक वाटर एड की रिपोर्ट आई थी, बैंक द सरफेस द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड वाटर 2019 के अनुसार अगर हम भूमिगत जल की बात करें तो 24% अकेले भारत इस्तेमाल करता है पूरे विश्व के भूमिगत जल का। यानी कि भारत दुनिया में भूमिगत जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वर्ष 2000 से 2010 के बीच की बात करें तो भारत में भूमिगत जो जल के घटने की दर है वो 23% तक बढ़ गई है। इसके अलावा भारत भूजल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, जो विश्व का 12% है। नीति आयोग का जो पहला इंडेक्स आया था, जो पहला इंडेक्स है 2018 में, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, उसके अनुसार बात करें तो भारत अपने इतिहास में सबसे खराब जल संकट का सामना कर रहा है। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2020 तक 21 भारतीय शहरों में भूजल समाप्त होने की संभावना है। रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया है कि वर्ष 2030 तक भारत में जल की मांग उसकी पूर्ति से लगभग दोगुनी हो जाएगी और लगभग 40% जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल नहीं मिलेगा। यदि जल संकट रहा तो 2015 तक भारत की जीडीपी में 6% तक भी कमी हो सकती है। और अभी जो देश की बात करें तो लगभग 60 करोड़ लोग गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। इसके बाद में 2019 में भी भारत सरकार की रिपोर्ट आई, नीति आयोग, उसमें बताया गया कि भारत के विकास और पर्यावरण प्रणाली को बनाए रखने की जल के वैज्ञानिक प्रबंधन पे जोर देने की बात कही है। विश्व वाइल्ड लाइफ फंड वाटर रिस्क फिल्टर 2020 के भी जो ताजा सर्वे हुआ उसमें भी ये कहा कि अगले 30 वर्षों में दुनिया के 100 शहरों में बेहद गंभीर संकट होगा जल संकट का। इस लिस्ट में
जो उन्होंने लिस्टेड किया तो भारत के 30 शहरों को शामिल किया। अगर क्लाइमेट चेंज की दिशा में सही और पुख्ता कदम नहीं उठाया गया तो 2050 तक करोड़ों लोगों को पानी के लिए तरसना होगा। तो और राजस्थान की बात करें, जैसे हम राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे और भी खराब हालत है पानी की। लेकिन जो यहाँ के लोगों ने जो प्राचीन जो ये जल को सहेजने और इसको संरक्षण करने की जो विधियां हैं अपनाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसमें बात करते हैं आगे। एक इसमें जो राजस्थान में जो जल संसाधन की जल संचयन की परंपरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को जल संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक अभावग्रस्त वाला राज्य माना गया है कि क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है। देश की कुल सतही जल का मात्र 1.16% और भूजल का मात्र 1.72% जल ही यहाँ पे विद्यमान है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे कुल क्षेत्र का देश के क्षेत्र का 10.41% भूभाग है और जनसंख्या 5.5% है। जल की महत्ता पर राजस्थान में एक कहावत भी प्रचलित है, घी बह जाए तो कोई बात नहीं पर पानी व्यर्थ में नहीं बहना चाहिए। जैसा कि सबको पता है राजस्थान का राज्य का अधिकांश भाग रेगिस्तानी है, रेतीला है, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ वर्ष भर बहने वाली नदियां भी नहीं है। इस विकट की स्थिति में यहाँ के निवासियों ने वर्षा की अमृत बूंदों को, क्योंकि यहाँ जल को अमृत के समान माना गया है, एक सहज के रखने की परंपरा बनाई। राज्य में सुनियोजित ढंग से बूंदों का संग्रह करने के लिए कुंडी, टांका, बावड़ी, बेरिया, नाडिया, तालाब, कुएं, झील और खड़ी इत्यादि बनाकर उसमें वर्ष भर उपयोग योग्य जो जल को सजो के रखा। जो अनुपम मिश्र जी है वो जल संचयन की जो राजस्थान की विधियां इनको सजो के और संवार के रखा है। इनकी दो किताबें हैं महत्वपूर्ण। एक तो जल की राजस्थान की रजत बूंदे और आज भी खड़े हैं तालाब, उसमें बहुत ही बढ़िया विश्लेषण किया है इन्होंने। और इन्होंने जो इस किताब में बताया कि वर्षा के सीधे जल धरातल पर बहते जल के रूप में पाला जल कहा जाता है जो धरातल पे बहता है, और भूजल के रूप में पाताली जल है, और इन दोनों के बीच में रेजानी जल कहलाता है। राजस्थान में जल संचयन की परंपरागत विधियां भी उच्च स्तर की है क्योंकि इनका विकास राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का प्रमुख योगदान है। यहाँ पर जो राजस्थान में स्थापत्य कला के प्रेमी राजा महाराजाओं, बड़े बड़े सेठ साहूकारों और अपने पूर्वजों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से भी यहाँ पे कलात्मक बावड़िया, तालाब, झालरों, कुंडों का निर्माण किया गया है। जल संचयन की पारंपरिक संरचनाओं तथा द्वारा कृषि, उद्योग, पशुधन में भी उपयोग एवं पेयजल की समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालीन जो नीतियां हैं वो बनाई गई है। इसमें जो राजस्थान की जो मुख्य हैं इसमें कुंड है, टांका के द्वारा रेगिस्तानी इलाकों में वर्षा के पानी को रोक के उसका संग्रहण किया जाता है, जिसका मुख्य उपयोग पेयजल के लिए पहले किया जाता था। टांका के लघु रूप को एक कुंडी कहते हैं। संपूर्ण मरुभूमि में भूजल लवणीय होने के कारण वर्षा जल का संग्रहण इन कुंडों में किया जाता है। बहता पानी निर्मला की कहावत इन कुंडों के माध्यम से ही सार्थक होती है। कुंडी हर जगह मिलता है, पहाड़ पे, किलों में, मंदिरों में, घरों में, आंगन में, छत में, गांव में, रेत में, खेत में, वो सब जगह और सब समय बनता रहा है कुंडा। जिस आंगन में कुंडों व टांकों के लिए वर्षा का पानी जमा किया जाता है उसे आगोर या पायतन कहा जाता है, जिसका अर्थ है बटोरना। खाली होने पर इन्हें नाडियों एवं तालाबों से भर दिया जाता था। खड़ीन जल संचयन की पारंपरिक विधियों में बहुउद्देशीय व्यवस्था है। ये परंपरागत तकनीकी ज्ञान पर आधारित होती है और इसका विकास 15वीं सदी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया। इसका निर्माण हेतु राजा अपनी जमीन देता था जिसके बदले उपज का 1/4 हिस्सा राजा को वापस मिलता था। खड़ीन मिट्टी का तालाब होता है जो किसी
ढाल वाली भूमि के नीचे निर्मित करते हैं। इसकी दो तरफ मिट्टी की पाल उठाकर तीसरी ओर पत्थर की मजबूत चादर लगाई जाती है। खडीन की पाल को धोरा कहा जाता है। खडीन द्वारा शुष्क प्रदेशों में बिना अधिक परिश्रम के फसल ली जा सकती है, क्योंकि इसमें न तो अधिक निराई की जरूरत है, न गुड़ाई की जरूरत होती है, और न रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक। वर्षा जल संचयन की जो प्राचीन विधियों में तालाब भी प्रमुख है, और तालाबों की तलहटी के समीप ही कुएं बनाए जाते थे, इन्हें बेरी कहते थे। जल का आवक क्षेत्र विशाल हो तथा पानी रोक लेने की जगह भी अधिक मिल जाए तो ऐसी संरचना को तालाब कहते हैं। तालाब बनाए जाते हैं वहां पे। तालाब नाड़ी की अपेक्षा अधिक क्षेत्र में फैला हुआ होता है, कम गहराई वाला होता है। तालाब की पाल को नुकसान पहुंचाए बिना अधिशेष जल की निकास के लिए नेस्टा बनाए जाते हैं। एक तरह से नाली है नेस्टा। थार के रेगिस्तान में बसे हजारों गांवों के नाम भी तालाब के आधार पर मिलते हैं। गांवों के नाम के साथ ही जुड़ा है सर, जैसे कि जोधपुर का रानी सर एवं पद्मसर तालाब। और तालाब का ही जो छोटा रूप है उसे नाड़ी कहा जाता है, जिसमें वर्षा जल संचित होता है। इसका जल संग्रहण 10 से 100 हेक्टेयर तक होता है तथा गहराई 3 से 12 मीटर तक होती है। यह भी मिट्टी से बना होता है। राजस्थान में सर्वप्रथम जो पक्की नाड़ी का निर्माण का विवरण मिलता है वो 1520 के लगभग मिलता है, जब राव जोधाजी ने जोधपुर के निकट एक नाड़ी बनवाई थी। जैसलमेर में पाली वालों के ऐतिहासिक 84 गांवों में 700 से अधिक नाड़ियां और उनके चिन्ह आज भी देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान में जल संचयन का जो परंपरागत ढंग से सर्वाधिक संचय झीलों में होता है। यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध झीलें हैं, जिसमें राजा महाराजाओं, बंजारों का, आम आदमी का, सबका सम्मिलित रूप से योगदान है। उदयपुर की जो विश्व प्रसिद्ध झीलें हैं जैसे जयसमंद, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला सागर में भी काफी जल संचयन होता है। राजस्थान में कुओं की भी अपनी समृद्ध परंपरा रही है। कच्चे पक्के कुओं के विविध रूप यहाँ पर देखने को मिलते हैं, किंतु पश्चिमी क्षेत्रों में कुओं का अर्थ धरातल से पाताल में उतरना होता है। 300 फीट गहरे कुएं की गहराई 60 पुरुष होने के कारण लोग इसे 60 कुआ भी कहते हैं। झालरों का कोई जल सोर्स नहीं होता था। ये अपनी ऊंचाई पर स्थित तालाबों या झीलों के रिसाव से ही पानी प्राप्त करते थे। इनका कोई अपना एरिया या आगार नहीं होता था। झालरों का पानी पीने के लिए उपयोग में नहीं आता था। वरन इनका जो धार्मिक कार्य है, रीति रिवाज पूर्ण सामूहिक स्नान और अन्य कार्य हेतु उपयोग में आता था। एक नाड़ी नाड़ी के समान ही एक जल संरक्षण केंद्र है टोबा या जोहड़। इसका आगोर नाड़ी से अधिक गहरा होता है। सघन संरचना वाली भूमि जिसमें पानी रिसाव कम होता है, टोबा निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल माने जाते हैं। इसके अलावा भी जो राजस्थान में विभिन्न जो जल की संरचनाएं हैं जो काफी है मात्रा में। इसमें जैसे कि अलवर में यहाँ पे ISTTP संपन्न हो रहा है, तो और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात है, जोहड़ वाले बाबा भी यहीं पे निकले हैं, राजेंद्र सिंह जी। तो उन्होंने एक तरह से जो जल है उसके संरक्षण के लिए राजस्थान के जल नायक राजेंद्र सिंह जी, जो जल संरक्षण में प्रबंध कार्य के लिए 2001 में मैक्से से पुरस्कार भी मिला। 2015 में इन्हें स्टॉकहोम जल पुरस्कार भी दिया गया है। इन्होंने राजस्थान राज्य में भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने हुए जल संरक्षण को लेकर व्यापक जन जागरण का कार्य किया। इस हेतु इन्हें अलवर में तरुण भारत संघ नाम की संस्था की स्थापना करी, और इस संस्था के माध्यम से इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सहभागिता से प्राचीन जल संरक्षण परंपराओं को पुनर्जीवित किया एवं वर्षा के जल को सजोए रखने हेतु छोटे बड़े जोहड़ों का निर्माण करवाया। इनके प्रयास से ही राजस्थान की जो 5 नदियां हैं, अरवरी, रूपारेल, सारसा, भागनी, जहाज वाली आदि, इन नदियों को एक नया जीवन मिला है, नव जीवन मिला है। एक लेख आया था अरुण तिवारी जी का, जो भी काफी जो जल प्रबंधन में अपने लेख अक्सर लिखते रहते जनसत्ता में, तो उनका जो हेडिंग था वो यही था कि कमी पानी की नहीं है, प्रबंधन की है। उसमें इन्होंने बताया कि भारत के पास कहने को तो राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर पर अलग अलग जल की नीति है,
लेकिन जल स्रोत से जितना लेना है उसे उतना और वैसा पानी वापस लौटाने की नीति की दरकिनार है। तो वो नीति भी आवश्यक है कि जितना हम लेते हैं उतना हम वापस भी दें, उसको सजो के रखें। इसमें एक जो कंसेप्ट आता है जो काफी आजकल प्रचलित है, जैसे कि कार्बन फुटप्रिंट का, ऐसे ही आता है वाटर फुटप्रिंट का। तो वाटर जो फुटप्रिंट की बात है, तो हमारे दैनिक जीवन में जो भी हम कुछ उपभोग करते हैं, जो भी हम खाते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, पहनते हैं, उन्हें बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वर्ष 2002 में अर्जेन वाई होकेस्टा ने एक इन्होंने एक विद्वान ने इन्होंने यूनेस्को और आईएचई के लिए काम करते हुए एक जो संकल्पना दी, वाटर फुटप्रिंट या जल पदचिन्ह। वाटर फुटप्रिंट ताजे पानी की कुल मात्रा के रूप में ये दर्शाया जाता है, जिसका उपयोग व्यक्तिगत या समुदाय द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं या सेवा है या व्यवसाय द्वारा उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इसको हम यूं समझ सकते हैं कि जैसे कि हम अपने कपड़े पहनते हैं कॉटन से, जगह जींस की बात करें तो कॉटन को हमने पनपाया, उसका प्लांट लगाया, उसमें कितना वाटर यूज हुआ वो रॉ मटेरियल के रूप में, फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स के रूप में गई, उसमें कितना पानी का उपयोग किया, फिर उसके बाद में फिनिश्ड गुड में जो हमारे हाथ में फाइनल जो जींस बन के आई या जो कपड़ा बन के आया कॉटन का, उसमें हमने पानी का कितना उपयोग किया। तो स्टार्टिंग से लेके जो लास्ट तक हमने पानी का कितना उपयोग किया, ये एक तरह से वर्चुअल है, वाटर है, आभासी पानी है जो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन हमने इसको यूज किया है। ये इसी संकल्पना पर आधारित है जो वाटर फुटप्रिंट है। भले ही हम सीधे तौर पे पानी का इस्तेमाल ना करें, लेकिन रोजाना पानी की बड़ी मात्रा खर्च होती है, जिसे हम वर्चुअल वाटर या आभासी जल कहते हैं। और ये आभासी जल की जो संकल्पना 1903 में टोनी एलन ने दी थी, और इस संकल्पना के कारण उनको स्टॉकहोम जल पुरस्कार भी मिला था। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जो वाटर एड की जो संस्था है, ये वाटर फुटप्रिंट के जो कहाँ कहाँ पे देश के हिसाब से और वस्तुओं के हिसाब से इसने अपनी वेबसाइट पे दे रखा है कि एक जो वही वस्तु है, कोई भी जो चीज है, उसमें कितना पानी का इस्तेमाल हुआ है, वो ये सीधे सीधे तौर पे बताती है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे देखा जाए तो यूरोप की बात करें तो औसत व्यक्ति सीधे एक दिन में 100 से 150 लीटर पानी का उपयोग करता है, पीने के पानी के रूप में, कपड़े धोने, स्नान करने, पौधों को पानी देने। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन 1500 से 10,000 लीटर के बीच पानी की खपत करता है। यह इस बात पर निर्भर भी करता है कि वो कहाँ पे रहता है, उसकी खपत की आदतें क्या है। और अगर एक तरह से देखा जाए तो यूएस में जो वाटर फुटप्रिंट है, एक ओलंपिक स्विमिंग पूल को भरने के लिए आवश्यक पानी जितना है, जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 7,786 लीटर पानी है। अगर हम बात करें 1 किलोग्राम गेहूं उत्पादन के लिए लगभग 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और मीट की समान मात्रा अगर 1 किलोग्राम उत्पादन के लिए इससे 10 गुना अधिक पानी की आवश्यकता होती है। 1 कप अगर कॉफी का वाटर फुटप्रिंट की देखें तो 140 लीटर, और 1 कप चाय का देखें तो लगभग 34 लीटर इन्होंने बताया है अपने इसमें। इसमें जो वर्ष 2011 में भी वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क एक वेबसाइट बनाई, इनमें पर्यावरण संगठनों, कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक सहयोग से एक ग्लोबल वाटर फुटप्रिंट स्टैंडर्ड का भी शुभारंभ किया है। और 2014 में मानकीकरण के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इसमें ISO भी इसे प्राप्त हुआ है। तो वाटर फुटप्रिंट की गणना आवश्यक है। सुरक्षित पीने के पानी के साथ साथ स्वच्छता तक टिकाऊ पहुंच की आवश्यकता हमें ये इसकी आवश्यकता है कि हमें पता हो कि हम कितने पानी का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वाटर फुटप्रिंट से पता लगता है कि हम कितने पानी का यूज कर रहे हैं। भारत का वाटर फुटप्रिंट अगर देखा जाए तो 980 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बताया गया है,
जो वैश्विक स्तर का 1243 क्यूबिक मीटर है उससे नीचे है। दुनिया की कुल वाटर फुटप्रिंट में भारत का योगदान लगभग 12% है। और हम इसको तीन भागों में भी बांट सकते हैं, जैसे ग्रीन वाटर फुटप्रिंट है, ब्लू वाटर है, और इसके अलावा ग्रे वाटर है। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में कम से कम मतलब साल में एक बार एक हिस्से में पानी की कमी से जूझ रहे लोग मतलब मिलते ही हैं। और जैसे पहले बताया था, इस रिपोर्ट के अनुसार 24% भूमिगत जल का अकेले भारत इस्तेमाल करता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत जल का उपभोक्ता है। अ, और भारत में एक व्यक्ति औसत रूप से 3,000 लीटर पानी का इस्तेमाल करता है। इस 3,000 लीटर में आभासी जल की जो बड़ी मात्रा शामिल होती है। इसके अलावा जो हम वाटर का जो इस्तेमाल है, और वहाँ पे हम इसका जो उपाय है, तो एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्री है इंडिया, तो हम एग्रीकल्चर में काफ़ी जो प्रयास करके, जैसे आज का जो नवीन टेक्नोलॉजी स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंदर हम बात करते हैं इसके वर्टिकल फार्मिंग की, हम बात करते हैं ऑटोमेशन एवं रोबोटिक्स की, लाइव स्टॉक टेक्नोलॉजी की, और आधुनिक जो ग्रीन हाउस प्रैक्टिस है, कृत्रिम बौद्धिकता एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और इसके अलावा जो भारत सरकार ने भी काफी जो इस तरह के जो स्टार्टअप के लिए काफी सहायता की भी बात की है। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग की बात करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग, द इंटरनेट ऑफ थिंग डिस्क्राइब फिजिकल ऑब्जेक्ट विथ सेंसर्स, प्रोसेसिंग एबिलिटी, सॉफ्टवेयर एंड अदर टेक्नोलॉजी that connect and exchange data with other device and system over the internet और अदर कम्युनिकेशन नेटवर्क। मतलब कि एक तरह से इंटरनेट आईओटी एग्रीकल्चर में हम यूज करें तो रोबोट्स, ड्रोन्स के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कहाँ पे जमीन समतल है, पानी की कहाँ मात्रा कम है या ज्यादा है, किस पौधे को कितना पानी की जरूरत है। और जो रिमोट सेंसर इसमें काफी इस्तेमाल करते हैं, तो सारी सूचना ऐप के थ्रू किसान के ऊपर भी, किसान के मोबाइल को भी प्राप्त हो जाती है। और कंप्यूटर इमेजिंग कंबाइंड विथ कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग मशीन लर्निंग एंड एनालिटिक टूल्स फॉर मॉनिटरिंग, जैसे बताया क्रॉप्स के लिए, सर्वे करने के लिए, मैपिंग के लिए, मैपिंग द फील्ड, और प्रोवाइड डेटा टू फार्मर फॉर रैशनल फार्म मैनेजमेंट, प्लान टू सर्व बोथ टाइम एंड मनी। तो ये टाइम भी बचाता है, मनी भी बचाता है, और पानी का सदुपयोग भी होता है। इसके अलावा एक जो है, एक ब्लॉकचेन का भी एक कंसेप्ट चलता है। इसमें है कि ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस दैट मेंटेन ए कंटिन्यूअसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड रिकॉर्ड called block. These blocks are linked using cryptography. Each block contains a cryptographic hash of the previous block, a time and transaction data. ब्लॉकचेन की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी कैन tracked all type of information about plant such as seed quality, crop growth, even generate a record of the journey of the plant after it lives over the farmer। तो ये एक तरह से जैसे कि बही खाता होता है, तो वो फिजिकल रूप से हमारे पास होती है, एक लाल किताब होती है बही खाते की, तो ये ऑनलाइन बही खाता है, इसमें सारा रिकॉर्ड होता है। और ये इतना सिक्योर है कि इसको मतलब सिक्योर बनाया है कि कोई इसको हैक भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हम जो इन टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हमारे जो जो जल संरक्षण के कार्य हैं उसमें काफ़ी रूप से कर सकते हैं। और स्मार्ट फार्मिंग का जो कंसेप्ट है ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। इसमें एक ये कृषि प्रबंधन की अवधारणा मान सकते हैं, जो इसमें बड़े बड़े जो क्लाउड्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, जैसे मैंने पहले बताया, आधुनिक तकनीकों का उपयोग
कृषि उत्पादन की ट्रैकिंग, निगरानी, स्वचालन और संचालन का विश्लेषण इस प्रकार करके। अब जैसे इसमें सेंसर है, जैसे पानी सेंसर लगा दिया, पानी कितना चाहिए उस खेत में, तो पानी का बचाव भी होगा। प्रकाश कितना चाहिए, आर्द्रता कितनी चाहिए, तापमान का प्रबंधन कितना है। मृदा की स्कैनिंग होती है कि भाई कहाँ पे कौन सी मृदा किस प्रकार से चाहिए। इसमें जीपीएस का भी इस्तेमाल होता है और इंटरनेट ऑफ थिंग, जैसे मैंने पहले बताया, फसल की पैदावार। इसमें निर्णय लेने की क्षमता भी है कि कीट, रोग, मौसम आधारित भविष्यवाणियां, इस प्रकार से। Hello, doctor. Hello, Dr. Sobha. Dr. Amrin Sobha. I think you have muted yourself or something. Please unmute yourself, does Mr. Speaker. Hello. Hello. ये आवाज कैसी आ रही है सर? आवाज आ रही है सर। आप मीटिंग से बाहर हो गए? अच्छा, हाँ आप जुड़ जाओ इसको खत्म। वहाँ भी लाइट चली। Hi everyone, I just spoke to Dr. Sobha. There's a slight fluctuation happening inside our room, so he'll be joining us in a minute. So, meanwhile, before wasting any of our time, I'm introducing you to all. Can I have the camera, please? Till Dr. Sobha joins back. So, without wasting any more time, I will make you introduce you our next keynote speaker. Our next keynote speaker is Dr. Nagin Singh. Dr. Singh is working as a principal of the institution and professor in the Department of Electrical Engineering at Trinity College of Engineering and Technology, Telangana, India. He has worked at various positions like head of the department, lead academic and exam superintendent. He has published many research articles in refereed SCI scopus index journals and conferences. He has published 8 book chapters and edited 3 books published by Indian and international publishers. He has been done academic design patents
He has organized many national international conferences as well as faculty development programs and services. His area of interest is optimization technique, artificial intelligence, power systems, renewable energy systems, power electronics, smart antenna, blockchain technology. He's a life member of various professional bodies. He's a reviewer of many international journals. डॉक्टर सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है, हम बहुत खुश हैं हर्षित नासिक में आपको अपने बीच पाकर। वैसे मैं एक व्यूअर्स को एक बात बोलूंगी क्योंकि आप इंजीनियर हैं और आप टेक्नोलॉजी से डील करते हैं, तो आपने आज ये स्थिति आ गई है हमारी कि हम जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो बाद में लिखा आता है कि एक लाइन लिखी आती है कंफर्म दैट यू आर नॉट अ रोबोट, तो आगे का पढ़ना है ना रोबोट्स। This is what we have made us. So बहुत ही gratitude and respect के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे next university और अपना गिरते सिंह जी को कि वे अपना deliberations start करें। So stage is all yours, Dr. Singh. Thank you so much, madam. Very good morning. I think very good afternoon to all of you. And can I share my PPT? Yeah, sure. जी सर, begin क्या? Okay, is it visual? वो अभी स्टार्ट कर, आप अगर आना चाहते हैं तो आप फिनिश कर लीजिए अपना। Rico Gio. Madam, screen is visible? वो शेयर कर रहे हैं आपको, तो मैं आपको ज्वाइन करवा दूँ वापस? ठीक है, that's thank you. Madam, kindly आप मुझे, मैं अपने PPT शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ से कुछ टेक्निकल इशू है। शीतल, can you provide some technical support to Dr. Singh? शीतल, बताओ, हाँ, speak to. Hello. Good morning, sir. Dr. Singh, शीतल is talking to you. ये आपको हेल्प करेंगे आपको। They are on the water. Mosquitoes, all the night. हेलो। They have हाँ, एक्चुअली शेयर ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे इसमें, आप थोड़ा सा उधर से यदि मैनेज करें तो शेयर ऑप्शन आएगा। Disease control. I will request everyone to kindly mute your mics, please. Awareness on disease control. शीतल accept Singh. हाँ जी। So yes, okay, fine. Is it visual? Yes, sir. There is screen visible now. Okay, thank you so much. So, as theme of the STTP, I want to share here one thought about the electrical system. Means how we can reduce, reuse, and recycle the electrical system. So let's see. First of all, like it is our system. So first is the reduce the waste as much as possible. So already you know about this one. The government and instruct us what we have to use and what we have to avoid it. Second one is the reuse. Reuse means we can use things which can use again and again without harmful things. We have to reuse it and recycle. Already you know, if required, we can recycle and again reuse it. Okay, so this is the things about the 3R. Now I'll share some pictures here for electrical engineering related, which can shows what we have to use and what we have to reuse. So first, I want to share here videos. Hope pictures are visual. Madam, pictures are visual.
Hello, anyone? Is it pictures visible? Uh, Hello, madam. Can you can you tell me screen is visible or not? Visible, sir. Okay, thank you so much. Okay, okay. So here, okay. So in generally, what happened in India, in village areas, people are using the uh, conventional chulhas for preparing the foods and the cookings, or they are using the LPG gases. But what is the problem with the conventional chulhas? It is emit the emissions and pollute the environment. So it is okay if the people are very poor and they are using, then okay. But if any people, they can use such kind of chulhas, it is totally uh, means harmful for the people. And LPG gases already we know it is limited sources. So what we have to do, we have to avoid these things, and we can go for the bio stove chula. We each bio is biogas. Already I will explain in the next slide what is the biogas, and what is the advantage of biogas is the recycle process. Here, villagers can generate the biogas and reuse it. Okay, and second thing is the solar stove. Today we have solar power generation system, and it is also feasible for the small. So if people require, they can use the stove chulhas also. I am not talking about any technical analysis of the biogas or solar stove. I am just discussing about the theme, means like we want to reduce. So what we have to reduce and how we can reduce, means if you want to avoid any things, then how you can use the new things. So if you want to avoid the conventional chula or LPG, then you have substitute like biogas and solar stove. Next, if I come to the daily life uses vehicles like motorcycles, cars, diesel cars, and petrol cars. This time we are using already. You can see in everywhere. But time being already, it is very harmful for the environment. It is emitted toxic gases, and almost all human beings are suffered with the environment changes. So what we have to do? Slowly, we have to go for the electrical vehicles, and if it is possible, we can go for hybrid cars. But again, here some problem. Like, what is the problem here? If we go for electrical vehicles, there is very here we have two problems. One problem is the costing of the electrical vehicles is very high compared to conventional vehicles, and second one is the charging station. Charging station not available and everywhere. It's available on. Your slide is not, Hello. your slide is not moving, sir. Not with you. Yes, sir. Now, Hello. it's okay now. Slide is visible, na? Yes, sir. Okay. Thank you. So electrical vehicles slowly we can use, and after some time you can see all uh, classical vehicles will be removed by the electrical vehicles and hybrid cars. Electrical vehicles and hybrid cars are comparatively very high cost, but slowly government try to reduce the cost of electrical vehicles and hybrid cars. So in futures we can avoid the diesel and petrol vehicles.
Next is very important traveling things is train. Uh, in most of the countries, we are using the electrical train, but in a small area, this time also, some small areas using the diesel uh, operated train. Such kind of train is very, very harmful and very, very costly. If they are using the diesel engine, it's very costly. So what the government trying to develop the solar operated trains, means we have to reduce the use of diesel engine operated trains, and it is replaced by the solar operated trains. Uh, in Tamil Nadu, one train is started, and slowly in all over India, they are trying to replace the all kind of diesel and electrical trains by solar operated trains. So it is good start for the environment and saving the uh, amount also. Next is if we can say for electrical engineering, most important thing is the power generation system. In India, especially I am talking about the India, so about 56% power is generated by thermal power plant, and about 8% power generated by the nuclear power plant. So already you know, in thermal power plant, we are using the coal as a fuel, and when you burn the coal, it is emit the toxic gases and pollute the environment. At the same time, cost of the coal increases day by day, and it sometimes it is also not available in time. So what happens? Generation cost increases if we are using the thermal power plant. So what we have to earn then. Second is the nuclear power plant. Already you know nuclear power plant is very, very dangerous. It is very useful but very, very dangerous if any radiation is leaked. So what we have to do, we have to change the scenario, and we can go for the renewable power generation system. It is correct. The renewable power generation system contribution is very less in India because it's, government not taken initiative. They are just now started, so it's a slowly growing. Now it's a percentage is around 28%, sorry, 14%. If we can use the wind and solar, hydropower plant we can use it, but problem of the hydropower plant, it is seasonal power generation system because water is not available all time. So we can use the wind and solar mostly if possible, and we can avoid the use of thermal power plant and nuclear power plant as possible. And second thing is the biogas energy system. Biogas energy system actually it is very, very efficient and economical for the villagers peoples. If they can use the biogas energy system, they can recycle the crop waste and animal waste, and generate the power and use it for lighting as far as for cooking purpose. So these are the generation system. How we can reduce it means, if we want to reduce the use of thermal power plant and nuclear power plant, then what is the substitute you have? We have substitute like renewable power plants, and if we can increase the use of such plants, then slowly we can reduce the use of thermal power plant, means dependency we can change. Okay. Now, second thing is the, already it is clear from the picture. Villagers are using parali. Already it is very big problem in area of Delhi and Punjab. So they are burning the crop waste. If they can avoid it, and these crop waste converted into biogas system, means using biogas system and converted into electrical energy, then it is very useful for him. So we can avoid the parali and go for the biomass energy system.
So these are things where I want to say we can reduce the things and go for the new systems. And at the third system is our home. First, I started with the cooking, then a vehicle system, generation system, and this is the, our homes. If you can see in our home, we are not using the all system systematics. Where we required randomly, we can start it. And when will come, monthly will come, you can see sometimes people shocked how it is possible such kind of will come. So what we have to do? We have to use the smart home. Using with IoT system, we can manage the electrical equipments, we can avoid the extra billing, and also here, if people want, they can install the solar power plant and operate all the devices using the solar power plant. And if they are also want to work with the solar as well as grid connected system, then it's often also available. So it's a best way to use the smart home system. This is very big chapter. If I got time next time, I will explain this one. So we can avoid the normal operating system. We can go for the smart home system. This is my uh, next suggestion. What we have to use now. Second things is the reuse. So in electrical system, we have the many things where we have to reutilize the things, and we have to save the fuel as well as we have to increase the efficiency of the generating plant. So this is one of the picture. This is the thermal power plant. In thermal power plant, if you can see here, first we have to burn the fuel, and then we have to using the fuel. First we have to convert the water into heat, and then using that heat we have to move the turbine, and then generator used to generate the electricity. What we have to do here, after generation, steam, we cannot waste it. We can reutilize the, so steam we can utilize, and again reheat the water before entering into the boiler. So if we can reheat the water before entering the boiler, we cannot use much fuel to again generate the steam for generation of the electricity. Means first time we have to use the fuel and boil the water. After heating the turbine, this heat again reutilized to reheat the water. So next cycle, what happened? Water temperature will be increased. So we required less fuel to boil the water again. So this is the system which is used like a reuse. Means we cannot generate extra heat, but we can reutilize the heat. In this way, as already you know, the thermal power plant efficiency is about 32%. But if we use this recycle system, we can increase 5 to 10% of the efficiency, and around 30 42%, 37 to 42% normal uh, efficiency we can obtain if we can use this cycle system. Second one is when we are operating the thermal power plant, much of the ash generated, ash generated. Okay, so what we have to do, um, because this is also wasting material. So what we have to do, we can turn it into the bricks, cement bricks, or we can say ash bricks. Second things, same time these ash used to develop the roads. So what we are doing, we are in first thing here, we are utilize the heat
And here we are utilizing the ash products. Also, ash products used for the uh, um, cement plant. Okay, so these are the reuse cycles, means how we can utilize the waste material in future work. Unless what happen, the cost of the thermal power plant already is very high. So if we can sell the such kind of waste material, and we can generate some extra amount. Okay, so this is the reuse cycle, and last one is reuse for, like, this is the hydropower plant. In hydropower plant, what happened? I'll just explain you. It's simple. Here we have the intake, means like dam, and using dam, first we have to store the water. This water is sent to the four-way, means we have to set up some head, unless water force cannot be obtained. And in force way, first we have to using the pen stove, already here mentioned in the diagram. Here, using the pen stove, we have to send water to the generating station. Okay, and in generating station we have turbine and generator. So water heat in the turbine blades, and then rotate the generators, and electricity start to generate. And water will come to the downstream. Here already stream mentioned. This is the downstream. After hitting the turbine blade, water come to the downstream. So this water we cannot waste. We can use for, you can see here, using the canals. We have to use for the irrigation purpose, and also after water treatment we can use for the drinking purpose. So in hydropower plant, most of the water is we are using for irrigation purpose and drinking purpose. So this is the reuse of the hydropower plant water system. Now last thing is the recycling system. A recycling system in electrical system, I can explain by using one example here. First, in first picture, you can see we are generating the power using speed breaker. In speed breaker, what happened? We are using some sensors and piezoelectric devices. And when car move to the such a speed breaker, the piezoelectric device dimension will be changed, and hence it generate the electricity. Such electricity we can store using the battery. Already you can see the diagram number 2. So using the battery system, first we have to store the electricity, and then using the transformer, we have to connect with the generate third number diagram downside, send the electricity to the solar operated charging system. Actually, this is the charging system, and then again we have to charge the electricity. Sorry, we have to charge the motors, and when these motors again move to the road, we have to generate the power. Okay, and again this power is stored, and we have to reconnect with the solar operated charging station. Again, this solar charging station um, used to charge the vehicles, and then again, so this is the recycle process. How we can use the, means how we can generate the electricity using the vehicles, and then again we have to use it for vehicle. So this is the one example for recycling process in electrical engineering. And second example is from villages area, yeah, for biomass system. So see, in the first diagram, we are showing the crops wastage and cow and animals like that. Villagers using so many animals. So whether it is buffalo or cows. So wastage of animals and wastage of crops, it can be converted into biogas. Already arrow marks given, so you can see the arrow.
So it is converted into biogas system. Biogas system used for electrification and cooking. Here, electricity generation limit is very less, but it is used for the villager peoples because their demand is very less. So it, they can use biogas for lighting purpose as well as cooking purpose. And after generation of the gas, it have reproduced organic khad like that. Okay, it produce organic khad, which is very useful for the plants. And also, if we can reconnect this system with other solar or wind system or any grid system, then it can also use for irrigation of the plants. Okay, and again we can produce the plants using the biogas system. How? We can use the organic khad and we can use for irrigation purpose, and we can again reproduce the crops. Again, these crops used for the human peoples as well as the animals, and then again wastage of this one we have to convert into biogas, and then again it is used for the lighting and cooking purpose. So this is the recycle use of the biogas system. So thanks to all of you. I prepared actually this one in short time. So uh, I not use any special things and not use any theory because I know I can't explain theory for this one. I feel diagram is better for this one. So if anyone ask any question, please. So with the chat box. बहुत सारे appreciation है आपके लिए Dr. Singh. So if there are no more questions, I would like to thank Dr. Singh on the behalf of management, principal, organizers, and everyone. We would like to thank you for your time, and this is the success of ISTTP-6 when people like it were so much devoted and working for the protection of the environment and other technologies. That is the success of ISTTP-6 that you all join with us and talk on the delegates. So I would like to thank you from the bottom of my heart and from everyone here at RRC. That it's a pleasure to hear you, and the celebration was awesome. Thank you so much. Just checking, Dr. Smulwan is there because he had to complete his remaining calibration. Just check, Dr. Smulwan. Dr. Soba, can you hear me? आपकी आवाज तो जा रही है शायद है। He's not picking the call. So that's great. See if Dr. Amit Singh is there. Dr. Amit Singh. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are there, Dr. Singh? Yes, ma'am. Yeah. So we'll wait for Dr. Sonal. Meanwhile, I will introduce to you all our. Meanwhile, I will introduce to you all our next keynote speaker. He is Dr. Amit Singh. Dr. Amit Singh is currently working as an assistant professor and head of the department of botany
and BMD Government Girls College, Padru, Chhattisgarh. He has completed his master's from Bioscience and Bioengineering Department IIT Roorkee and completed his PhD from Department of Finance, University of Alabama. Dr. Singh has several publications in international journals of review and his publication got more than 12 citations so far. Artists, congratulations, Dr. Singh, that's a good number. He's a member of several international societies. He has also been awarded travel grant from various sources such as Department of Science and Technology, International Society for Neurochemistry, USA, and International Society of Hypertension to attend international conferences. Dr. Singh, since you are joining for the very first time with us, Thank you so much, ma'am. I will request Dr. Singh to start with his dedication. Thank you. Stage is all yours. So shall I proceed? Yeah, please. Yes, Dr. Singh, can you hear us? Hello. Dr. Singh, you have to unmute yourself. Actually, ma'am, I'm finding difficulty in sharing the slide. Just wait for a few minutes. Yeah, no Yeah. problem. Take your time, sir. Yeah, please. electrician. Hello, is it visible? Hello. Yes, very much visible, sir. We can see your slides. Yeah. Thank you so much for Dr. Mamta Sharma ma'am for nice introduction. And I would like to present my presentation is phytoremediation of possibilities of biological wastewater treatment and biofuel production. As you are now aware that I'm currently working as assistant professor and head at Department of Botany, BMK Government Girls College. And let's start with the introduction part. The slide is moving. Is the slide Yes. moving? Yes. The content of the presentation will be slightly about the background. Why do we need the wastewater treatment? What is wastewater? What is the chemical composition involved in this wastewater? And the second part of the presentation will involve the growth of microalgae on this wastewater and by utilizing the nutrients present in the wastewater. And the next will be the by harnessing the biofuel from the biomass generated. Next is the recycling of algal biomass.
As we all know that the surface water pollution, rising the world population and industrialization have emerged as a serious threat to the environment as they release millions of liters of wastewater to the nearby water bodies with the mistaken belief that the solution of pollution is dilution. Generally, the water containing industrial effluents and agriculture and household discharges are termed as wastewater by containing higher concentration of nutrients, whether it is nitrogen content, phosphorus, or the elemental or the heavy metals, whatever it is, whatever it is. The wastewater originating from these points or non-point sources, if disposed of in a nearby water bodies without any treatment, adversely affect the water quality and aquatic ecosystem. Now, it's about the composition of wastewater. There is no standard composition of wastewater. It is basically depend on the lifestyle and the technology which is being used in the particular industry. In the broad term, the wastewater composition is basically divided into two types. The organic waste, which is composed of carbon-containing biodegradable substances such as carbohydrates, fats, and protein. And the inorganic waste includes the elements such as sodium, potassium, nitrate, phosphate, and toxic heavy metals. There are several wastewater treatment strategies involving some physical, chemical, or biological methods. The physical methods involve the screening, comminution, sedimentation, flotation, and filtration by using centrifugation or the gravitational forces. And the chemical method involves disinfectation, adsorption, oxidation, dechlorination. The chemical methods, the drawback associated with chemical methods that result into the net increase in the COD of the particular environment. Now, how is the balancing method involved? Out of all these things, the most important one is the biological nutrients removal using micro. So there is a common term which is now being used as it is phytoremediation. That means that the utilization of algae for the removal of contaminants from the water. It is the term phytoremediation was coined by John in 2000 to denote the remediation of carried out by the microalgae, whether it is heavy metal remediation or it is the elemental or the organic part removal. The first report regarding the involvement of microalgae for wastewater treatment was reported by Oswald and Gotash in 1957. The alga-mediated wastewater treatment is effective in removal of nutrients such as nitrogen, carbon, phosphorus, full from bacteria, heavy metals, and it also reduces the BOD and CO2 level. Phytoremediation is a one-step efficient wastewater treatment, whereas the conventional wastewater treatment, which we have discussed previously, the physical and the chemical methods are the multi-step and it requires intensive chemical and energy, therefore very expensive. This is the diagrammatically showing the how the algae utilizes the nutrient present in wastewater to remove the nutrients. And say, for example, there in the top you can see that the industrial whether wastewater it is from industries, municipal wastewater, or the agriculture discharges, they contain heavy nutrients such as nitrogen and phosphorus, heavy metals, pesticide, additives, and hydrocarbon. And then, and as we all know, the algae are the photosynthetic organism. They require for photosynthesis they require sunlight, they require carbon dioxide and water. The organic matter present in the nutrients in the wastewater are being oxygenated by bacteria, and they release carbon dioxide, which in turn used by the algae to make the to do the photosynthesis. So algae do their growth. They take nutrients from the wastewater, they take carbon dioxide from the bacterial oxidation, and they take sunlight from the sun. Now, what phytoremediation does? The phytoremediation they absorb they decreases the nutrient present in the heavy metal and resulted in they flourish in the system. And this algal biomass resulted in the clean water, or this algal biomass can be used as a bio-based chemical, or this algal biomass can be used as their lipid can be extracted for the formation of biofuel. This is the slide which is showing how it is it utilized the nutrient present in wastewater. As you can see in the left side, the light
light and the water, carbon dioxide, and nutrients are being utilized by the chlorophyll present in the alga, and they flourish and they make oil, which is going to be used as biodiesel, hydrocarbons, and the starch that can be used for making bioethanol, and the biomass which is generated with the help of the nutrient and the light that can be used for the formation of biogas. The right one is showing the common nutrient uptake mechanism of microalgae from wastewater. You can see that the nitrogen and phosphorus, nitrogen is mostly turned into the amino acids. Phosphorus is utilized for the formation of ATP. You can see in the image. There's for the formation of amino acid, three enzymes are being utilized. The enzyme one is nitrate reductase, enzyme two is nitrite reductase, and enzyme three is glutamine synthase. This is the process how bacteria oxidize the carbon organic matters present inside the wastewater and releases carbon dioxide. This carbon dioxide in turns being utilized by the alga and releases oxygen to photosynthesis. So this process resulted in the reduction in the biological oxygen demand (BOD) level. Now the question is that what we can instead of, in addition to the wastewater treatment, what else can we do with the help of this algal biomass? As we all know that the global energy production relies basically on the fossil fuel, and the problem associated with this fossil fuel, they are unsustainable. Around 50 a research has been published in fourth national climate assessment by US Global Chain Research Program. That shows that there is only oil left of only for the 50 years. And the environmental problems are also associated with, such as global warming, pollution, whether it is air, water, or land pollution. And another problem is the price volatility. As we have must have read or must have listened from somebody else, the oil crisis between 1917 to 2000, the price volatility, and all the oil region from there the oil has been extracted, they are basically found in the politically unstable regions. So what is the possible solution? The possible solution is microalgal biofuel. Why it is possible solution? Because it is sustainable. They can sequester pollutants. In addition to the biofuel, they can sequester pollutants. They can be grown in anywhere in the world. And now, what is the problem associated with microalgal biofuel? They are not economical. They are around $11 to $13 required for making per gallon. New technology needed for this. And now, what is the ways to reduce this cost, that $11 to $13 per gallon? That can subsidies from the government. I cannot bet on that because the government is now try to decreasing the subsidies on everything. Photosynthetic efficiency by genetically modifying their genes or their enzyme synthesizing machinery. This is also a problem because they're all around the world. There is say no to genetically modified organisms. This is the most important part. This is the combining this with the wastewater treatment. So you can give the nutrient from the wastewater for alga to grow, and then sequester all the biomass for making biofuel or the making other products, bio-based product. This is combining this production with wastewater. This is in the right side. You can see this is the plant for wastewater treatment based on alga. As we all know that the wastewater the discharge contains high nitrogen, normally ammonia, phosphates, and potassiums, dissolved carbon dioxides, simple organic sources such as acetate, and micronutrients, magnesium, sulfur, iron, etc. These all needed for alga to grow in the medium, and you are providing the medium from the wastewater. So they basically flourish in this wastewater. What is the ideal process of this? So this is the wastewater, and what you are currently you are inoculating alga in this, and you are giving carbon dioxide and sunlight. They will do photosynthesis. They will take nutrient from the wastewater, and then they make their food through photosynthesis, and which leads to the production of algal biomass. That algal biomass contains lipids. That lipids can be extracted to make biofuel, and that also resulted in the treated wastewater, which is now
Now the second thing is that what is the things that needs to be take care before doing this? The microalgae selection, the right species needed for this. Purposeful selection is important in the production of microalgal species. Biotic factors such as the light, the high light is not needed. The temperature, nutrient, carbon, nitrogen, phosphorus, oxygen, carbon dioxide. The pH is very important, between 7 to 19. If it is acidic, they will not grow. If it is more basic, they will not grow. Salinity and toxic chemical. And there are certain biotic factors. Say, for example, that wastewater contains some microorganisms, say, for example, bacteria, fungi, viruses that hinders the growth of algae. That also needs to be done. And now this was the use of the microalgal based chemicals to reduce the wastewater containing waste materials. And after that, recycling. How to recycle the algal biomass? The algal biomass can be used for the production of human nutrition. Say, for example, the chlorella. Chlorella is now being used as a single cell protein. They're also being used for the formation of the antibiotic, which is single cell chlorella. Animal nutrition, fodder can be formed of, say, for example, laminaria and other alga-based alga that is being used as a fodder for the animal. Fertilizer and nutrients. There are certain foods, nutraceuticals. And in the right hand side, you can see image that the uses of microalga in cosmetic industries. Currently, the microalgal biomass is now being used as anti-aging cream, shampoo, body soap, eyeshadow, lipstick, face makeup, and others. They use in cosmetic industries. So this is the recycle. What we have discussed is the reducing the wastewater present in the wastewater treatment plant by using microalga-based treatment, microalga-based bioorganism. The second is the recycling of algal biomass for the production of nutraceuticals, pharmaceutical vitamins, fertilizers, nutrients, and human nutrition, animal nutrition, and in the cosmetic industry. In this RRR, reduce, reuse, and recycle, I just want to add one more R is that refuse. So you can say that the refuse, reuse, recycle, and reduce. Refuse as much as you can refuse to the toxicant which you think that this is not good for our environment. So better to refuse than reuse, recycle, and reduce. These are my certain publications which I published in journals. This is my Google Scholar profile, and thank you so much. Thank you so much, Dr. Singh. That was very nice presentation and very thought-provoking. Can I have the chat box? There are a lot of compliments for you. That's very informative, very explained, very nice. So, if there are questions, just try to see more questions. Thank you so much, ma'am, for giving me this Thank you so opportunity. I'd like to thank you, Dr. Singh, because there was some communication gap and some wrong messages circulated. So you got very little time to prepare, but whatever you have prepared was very informative, very well explained, and it is very thought-provoking. And we are very happy that you have joined us, and you have joined us for the very first time. And let me tell you this thing that RRC work is very particular and very sensitive towards environmental protection. And we keep conducting such kind of seminars, workshops, FTPs, and we have, please save the date, 12/13, 14 July, we have our second offline conference. Sure, ma'am. So we'd like to make it visit us. Anytime. Sure. So thank you so much. On behalf of our patron and principal and from the organizers, I would like to thank you so much for your dedication. Aapka bahut bahut. With this, we come to the end of the 6th day of ISTTP-6. And tomorrow we are going to meet again at 11:45 sharp with the new keynote speakers. And I would like to thank all my keynote speakers and all the delegates who joined us and made the 6th day of ISTTP-6 the successful one. So I'll see you all tomorrow at sharp 11:45.
a.m. Indian Standard Time. Till then, you have been a beautiful people, wonderful people, marvelous people. Take care and stay safe. Bye bye. And I have the week of the weeks. See you all tomorrow.